Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. This is your Ustad Academy. Student, मेरा नाम सलाहुद्दीन. Students, today we are going for the question number 7, chapter number 8, ICOM part 2. The book name is Principles of Accounting. Sohail Afzal की book है. This is your textbook. This chapter is about the retirement and death of the partner. इस चैप्टर में हम वो वाली प्रॉब्लम हल करते हैं जिसमें इन केस ऑफ एनी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर वी हैव टू प्रिपेयर सर्टेन अकाउंट्स. उन अकाउंट्स की मदद से वी कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर. जो पार्टनर रिटायर हो जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हमने जो पेमेंट करनी होती है उसकी कैलकुलेशन की जाती है. दिस इज 20 मार्क क्वेश्चन. ये चैप्टर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आमतौर पर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता है. Chapter number 7 and chapter number 8 both are very much important students for you. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आपको इस किस्म के क्वेश्चन पीछे जो पास पेपर था उसमें एग्जाम में आपको वहां पर मिलेंगे. You can see question number 7 on your screen. He says A, B and C are partners sharing profit equally. 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो रहा है. देयर बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2016 इज एज फॉलो. उनकी जो बैलेंस शीट है 2016 की ऑन 31 दिसंबर इज गिवन टू यू स्टूडेंट्स. ऑन द एसेट साइड्स ही सेज कैश एट बैंक 4000, बी रिसीवेबल 3000, सनड्राई डेटर्स 20000, लेस रिजर्व फॉर बैड डेट्स 1000. Students, what is meant by reserve for bad debts? As we have already discussed in our previous video in the question number 6, ये point question number 6 में भी पूछा गया था आपसे और इस question में भी reserve for bad debts are given to you. Reserve for bad debts are the amount which we expect that this amount may not be recoverable from the debtors. Again, let me explain you. Reserve for bad debts are the expected amount. ये एक अमाउंट होती है जिसके ऊपर हम तवक्को करते हैं कि ये हमें रिकवर नहीं होगी. बट कीप इन योर माइंड स्टूडेंट, दिस अमाउंट इज नॉट कंफर्म्ड. दिस अमाउंट मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज. What is the difference between bad debts and reserve for bad debts? Bad debts are the amount that are not recoverable and reserve for bad debts are the amount that may not be recoverable. हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसके ऊपर काफी डिस्कस किया हुआ है. In this question, reserve for bad debts is 1000, so 20,000 minus 1000, 19,000 is your net amount. Stock is 18,000, fixtures are 3,500. On the liability side, sundry creditors 4,000, capital A, B and C are 12,000, 18,000, 7,500 respectively. Reserves are 6,000. Students, ये reserves के बारे में आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए. रिजर्व्स, व्हाट इज मीन्ड बाय रिजर्व्स? रिजर्व्स मीन द सेविंग्स ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स बिजनेसेस. पिछले सालों में जो बिजनेस किया होता है उसमें से जो प्रॉफिट होता है हमें उसमें से हम थोड़ी थोड़ी सेविंग करते जाते हैं. दिस इज कॉल्ड रिजर्व्स. Students, reserves may be of two types. One are the general reserve and the others are capital reserves. ये चीज आपको एग्जामिनर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है. एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल रिजर्व्स एंड द कैपिटल रिजर्व्स. Capital reserves are the reserves that are used for the fixed asset purposes, and the general reserves are the reserves that may be used for the day-to-day purposes. Again, let me explain you. रिजर्व्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व जो होते हैं वो आप साल के दौरान किसी भी टाइम उनको यूज कर सकते हैं. बट कैपिटल रिजर्व्स जो होते हैं वो फिक्स एसेट्स को यूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. दे आर द कैपिटल रिजर्व्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम जनरल रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन को स्टडी करेंगे. इस वक्त आप यू मस्ट नो कि रिजर्व्स मीन 6000.
these reserves should be divided among the partners according to their profit sharing ratio. इस वक्त जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली डिवीजन है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो 6000 है दिस शुड आउट ऑफ दिस 6000 2000 शुड गो टू ए, 2000 should go to B and 2000 should go to C. B retires on that date and the following adjustments are to be made for the purpose. Goodwill of the firm is valued at ₹12,000. ये गुडविल जो है 12,000 रुपये है. दिस शुड बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द शेयरिंग रेशियो पर्पसेस. Fixtures to be depreciated by 5%. Fixtures are the assets. They should be reduced by 5%. Stock to be appreciated by 10%. Your stock 18,000 should be increased by 10%. Reserve for bad debts to be increased by 500. उसने कहा कि जो reserve for bad debts हैं they should also be reduced. They should further reduce by 500. यानी अब उसमें से कहता है कि जो 19,000 में से भी 500 you should reduce. What is the requirement? He says draw the revaluation account, capital account of the partners and opening balance sheet of the continuing partners. वो कहता है 3 चीजें बनानी है. You have to prepare revaluation account, capital accounts and opening balance sheet. Let us start now, students, to solve this question now. You can see the question now. The step number 1, students. Step number 1 says prepare the revaluation account. We will prepare the revaluation account, students. Revaluation account, keep in your mind, students, this is a nominal account, temporary account. In this revaluation account, जो asset की value बढ़ेगी we will write on the credit side, और जिन assets की value decrease होगी हम उनको debit side पे लिखते हैं. You must keep in this point in your mind. इसमें देखें stock. He says stock to be appreciated by 10%. Stock की value should be increased by 10%. Stock हमारा है यहाँ पर 18,000. It should be increased by 10%. 18,000 का 10% लेंगे, that is 1,800. We will write the stock value on the credit side of the revaluation account because the value of the stock is increasing. Fixtures are should be depreciated by 5%. वो कहता है कि फिक्चर की वैल्यू 5% रिड्यूस होनी चाहिए, डेप्रिशिएटेड होनी चाहिए. So 3,500 multiplied by 5%, 175. We should reduce the value of the fixture. That is why we are writing on the debit side. Then he says bad debts. He says reserve for bad debts to be increased by 500. So what should we do? हमने 500 मजीद हमने से कम करने हैं. So that is why we are going to reduce 500. That is why we are writing on the debit side. Now students, stock is increasing but the fixtures and debtors are decreasing. हम क्या करेंगे? Stock total 1,800 minus 1,175 minus 500. This net amount you can see that is 18,000. 1,800 minus 675, the remaining is 1,125. This 1,125 should be divided among the partners equally because their sharing ratio is equal. You can see the answer 1,125, that is same 1,125. So revaluation count we have completed. Step number 2, he says prepares partners capital accounts. Partners capital account, students, you can see on the screen. इसको कैसे हमने प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स? We have to prepare partners capital with the opening balance. Opening balance we will start partners capital account with the opening balance. Opening balance हमारा कितना है? For A 12,000, that is given in the question. For B 18,000, that is also given in the question, and for C 7,500 also given in the question. After writing this opening balance, we will go for the revaluation account. Revaluation account में देखें 375 is going to each partner, so we have written 375 to the each partner.
Then we will go for the goodwill. Goodwill is already given to you. That is, we should divide goodwill equally among the partners because the profit sharing ratio is equal. So 12,000 divided by 3, 4,000 will be distributed to all partners equally. Reserves are 6,000. As I told you, reserves are the savings of the business, so they should be divided to the all the partners according to their profit sharing ratio. So profit sharing ratio in this question is equal. So that is why 6,000 को भी हम equally divide करेंगे और वो 2,000 रुपये हर किसी को चला जाएगा. After this, students, we will add all this amount, that is 18,375 for A, 24,375 for B, and 13,875 for C. यही नेट बैलेंस हमारा बैलेंस कैरी डाउन 18,375 फॉर ए, 20,375 फॉर बी. नाउ स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड बी इज रिटायरिंग, तो हम अब इसको कैपिटल बैलेंस नहीं कहेंगे, अब हम इसको लोन अकाउंट कहेंगे क्योंकि ये रिटायर हो रहा है. ही इज नो मोर विद द बिजनेस, दैट इज व्हाई दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज ए लोन which will be given, this amount will be given to B by the existing partners A and C later in future. And 13,875 is the balancing figure that you can see on this screen. So this is your partner's capital account. Easily you can prepare, students. I hope it it will be understandable to you. अगेन आपने इसको स्टार्ट करना है ओपनिंग बैलेंस से, फिर आपने रीवैल्यूएशन बैलेंस लेकर आने हैं, गुडविल लेकर आनी है, रिजर्व लेकर आने हैं, टोटल करना है, एंड देन आप इसकी बैलेंसिंग फिगर लेकर आएंगे, एंड द अमाउंट दैट इज ड्यू टू बी दैट विल बी कंसीडर एज ए लोन. The next step is prepare opening balance sheet as per requirements of the examiner. Opening balance sheet, students, you can see on the screen. Opening balance sheet will be prepared with the help of the old balance sheet. कैसे? Cash at bank, you can see in the question 4,000. It will be the same 4,000 because there is no change in the 4,000, so we will write the same amount. Bill receivable 3,000. There is no change in the bill receivable amount because we have not made any change in our working, so it will be the same. Sundry debtors, we have changed the amount sundry debtors with 18,500 because उसने कहा है कि जो सनराइज डेटर्स में है रिजर्व फॉर बैड डेट्स शुड बी फर्दर मेड 500. अब हम क्या करेंगे, 19,000 में से 500 माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट विल बी 18,500. स्टॉक, ही से स्टॉक शुड बी इंक्रीज, स्टॉक वैल्यू शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. वो हमने इसका जो 10% है 18,000 का 10% इसमें ऐड करेंगे, 19,800 विल बी द नाउ current value of the stock. Fixtures are 3,500, but according to the requirement he says that the fixture should be depreciated by 5%. हम इसका 5% इसमें से माइनस कर देंगे and the net amount would be 3,325. Goodwill is 12,000. Examiner has already given you 12,000, so goodwill is 12,000. When we make the total, it will be 60,625. Sundry credits no change because we have not made any adjustment. It will be the same. Capital accounts are the net amount that we have calculated in our previous slides. Okay, जो net amount of capital amount for A is 18,375, for C is 13,875, and for B is 24,375 because this is the loan. As I told you, it will be given to B by the A and C later in the future. अब हम इसको कैपिटल अकाउंट नहीं कंसीडर करेंगे, अब हम इसको लोन अकाउंट कंसीडर करेंगे. आई होप स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी, आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो, अल्लाह करे. और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में we will go for the question number 8. You can see on the screen, this is on page number 360, problem number 8, chapter 8, page 360. This inshallah ताला problem हम next video में हल करेंगे. Until that time students, अल्लाह हाफिज़. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मेरी ये वीडियो आपको फ़ायदा दे.
अगर आपको ये फ़ायदा दी है वीडियो तो इसको मेरे लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।